In the conservation biogeography, we will be discussing about that the future is digital. We are living in the age of information revolution, and this revolution of information comes with the profound impacts on culture, science, politics, and commerce. The venerable discipline of biogeography will be in front line of these changes as new technologies transform the quantity and quality of biogeographical data. So we have a lot of biogeographical data that needed to be analyzed, and first of all, this also needed to be collected at first. अभी हमें यही इल्म नहीं कि दुनिया में कितनी स्पीशीज़ मौजूद हैं. तो ये तमाम का तमाम तर data, first we have to collect that, and then we have to analyze, and then we have to make certain policies to conserve these species. So what is base unit? Base unit of a biogeographical knowledge is a record of a species, or less frequently another taxonomic unit, at a precisely defined point in time and space. So जो data का unit है, that is a record of species in case of biogeographical knowledge. So how to collect the data? As a professional scientist would enter in the field, collect specimens, bring them to the laboratory for identification, place the preserved specimen in the museum collection, and publish the data in scholarly reports or scientific articles. ये सारा का सारा process पिछले 200-300 साल से हो रहा है. And now we need to revamp our efforts, and we have to digitize our data collection and also the analysis as well as the policy making. So taxonomists will always be needed. However, the advances in mobile technology may eventually provide a way to circumvent the taxonomic impediment and generate enormous quantities of data on species occurrences. हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, और मोबाइल फ़ोन्स की वजह से दुनिया में एक इंफॉर्मेशन का इनकलाब आ गया है. And how is that? We will be discussing. The core component is the development of apps, the computer application or mobile applications, जिनको हम apps भी कहते हैं. ये एक core component है इसमें, which are able to link the technological forces of cloud and mobile computing. या तो internet जो कि cloud computing होती है, और मोबाइल कंप्यूटिंग जो मोबाइल के अंदर अपना कंप्यूटेशनल सिस्टम है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं. And when that data is collected, that is given to the social networking and big data to transform the mobile devices into sophisticated biodiversity sensors and powerful computers. हम मोबाइल के साथ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हैं जिसके ज़रिए वो माहौल में मौजूद जिस डिफरेंट जानदारों का डाटा इकट्ठा करें, उसको कंप्यूटर में अपने पास स्टोर करें, एनालाइज करें, और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग जहाँ पे वो तमाम तर साइंटिस्ट या मुख्तलिफ टूल्स जो हमारे पास मौजूद हों एडवांस किस्म के, वो उनको एनालाइज करें, एंड देन वी कैन सॉर्ट दैट डाटा इन अ वे दैट वी हैव सर्टन biogeographical unit or base unit data which we can further use to make our decisions which are for the conservation biogeography. The biogeography app, of course, we are not in that age yet, but there are certain steps, the preliminary steps in which we have formed or we have made some biogeography apps. And the IBAT app, Indicator Bat Program, uses a handy ultrasonic बैट डिटेक्टर दैट कैन बी प्लग्ड इनटू स्टैंडर्ड स्मार्टफोन. एक स्टैंडर्ड स्मार्टफोन लें और उसके अंदर हम बैट डिटेक्टर उसके साथ लगा देते हैं, इनेबलिंग यूजर्स टू रिकॉर्ड बैट कॉल्स एंड अपलोड द जियो रेफरेंस डाटा टू एन ऑनलाइन डाटा बेसिस. तो वो क्या करता है कि जो अल्ट्रासाउंड वेव्स बैट्स प्रोड्यूस करती हैं उनको इन्वायरमेंट से इकट्ठा करता है और उसको ऑनलाइन डाटा बेसिस में डाल देता है. एंड इट यूजेस एन ओपन एक्सेस क्लासिफिकेशन टूल विच इज़ कॉल्ड IBATS ID. So based on their voices, the ultrasound voices, it will classify them into different parts, into different classes. So IBATS ID deploys ensembles of artificial neural networks to classify time-expanded recordings of the bat echolocation calls from 34 European bat species. So what it will do, ये 34 किस्म की जो bats हैं
उनकी आवाज़ों के साथ उनका मुवाजना करेगा और जिस आवाज़ के साथ वो मिलती होगी उसी क्लास में डाल देगा, लेकिन उसके साथ साथ वो उसकी लोकेशन भी बता देगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे ये रिकॉर्ड हुई है उस वहाँ पे ये पर्टिकुलर बैट की आवाज़ जो है वो सुनी गई है. Recording not suited for machine identification or submitted to Zooniverse रियल साइंस ऑनलाइन प्रोजेक्ट. सो जो रिकॉर्डिंग्स ऐसी होती हैं जो कि वो कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये 34 बैट्स में से कौन सी बैट की आवाज़ है, उसको हम जूनिवर्स में बेच देते हैं. व्हाट इज जूनिवर्स वी विल बी डिस्कसिंग. So Zooniverse is a collection of online citizen science projects with over 500,000 registered users. तो इसमें ह्यूमन यूज़र्स हैं जो कि मुख्तलिफ साइंस के प्रोजेक्ट्स करते हैं. यूजिंग द रिमार्केबल पैटर्न रिकग्निशन कैपेसिटीज ऑफ ह्यूमन ब्रेन, सिटीजन वॉलंटियर्स क्लासीफाई, एक्सट्रैक्ट एंड डिस्कस साइंस डाटा फ्रॉम फोटोज ऑफ गैलेक्सीज टू एंशियंट डॉक्यूमेंट्स. तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो शहरी हैं, जो लोग हैं, उनके दिमाग का इस्तेमाल करते हैं. हम कुछ इंटरनेट पे डाटा मौजूद है, हम यूज़र्स को इस बात पे राज़ी करते हैं या उनको वो वॉलंटियर हैं जो कि रज़ाकार हैं और वो अपना काम खुद से ही वो ऑनलाइन रिसोर्सेज में जाके वहाँ पे बैट की कॉल सुनेंगे एंड दे विल आइडेंटिफाई एस्थेटिकली विद देयर पैटर्न रिकग्निशन इन देयर ब्रेन बिकॉज द today's technology has not reached to the level of the brain. So दिमाग जिस तरीके से पैटर्न को रिकग्नाइज कर सकता है, अभी हमारी टेक्नोलॉजी उस हद तक नहीं पहुंची. तो वो रज़ाकार जो हैं वो इन आवाज़ों को सुनेंगे, उन बैट कॉल्स को सुनेंगे और उनको 34 स्पीशीज़ में से किसी भी स्पीशी में डाल देंगे. अगर वो 34 आवाज़ों में से ना हुई तो देन अ न्यू स्पीशी कुड बी discovered one day on the basis of these echolocation calls. And then there is the map of life. What is map of life? It is an ambitious global bioinformatics project that is a public online quality vetted map for the every species on earth. तो हम क्या करते हैं कि एक ग्लोब बना लिया जिसमें हर स्पीशी का पर्टिकुलर जगह, कौन सी स्पीशी किस जगह पे इस ज़मीन पे पाई जाती है, वो मैप ऑफ लाइफ है. एंड देन देयर इज encyclopedia ऑफ लाइफ, अ प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड बाय द बायोजियोग्राफर E.O. Wilson, aims to make available via the internet virtually all the information about life present on earth. ज़िंदगी के बारे में जो भी मालूमात आज हमारे पास मौजूद हैं उनको इंटरनेट के ज़रिए तमाम दुनिया तक को मैसर करने का एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ.